So we'll go Parmeshwar. We are already live. Okay. So all those who are watching us, we are live with Parmeshwar after nearly 6 months. 6 months हो गया रहेगा Parmeshwar, right? I guess, yeah, 5 to 6 months, yes. 5 to 6 months. So we are live with Parmeshwar after 5 to 6 months. I will tell you who Parmeshwar is and few stuff. Meanwhile, let me check whether it's being aired on YouTube as well. Yes, it's being aired on YouTube. इसका link अपन group में share करते हैं. So we'll go Parmeshwar. We are already live. Okay. Wait. All those who are watching the इसका group, let me share it in the WhatsApp group. Well, it's going to be a very good discussion. Meanwhile, let me tell you something about Parmeshwar. We have been working with Parmeshwar from quite some time, like 2 years back or nearly 1.5 years back, we interacted for the first time. And he is a MIS professional. He has been working with some of the corporates. He has been working with some of the corporates as a part of MIS team. So it's literally our privilege to have him here, and we will disclose today some of the important stuff. Yeah, it's done. It's shared in YouTube. So guys, so we will talk today about some of the important stuff about how MS Office helps at work, the importance of MS Office, the scope of MS Office, why a person should know MS Office, and how it life becomes very easy. So एक discussion रहेगा परमेश्वर के साथ, and after particular thing, we will also cover the basics of. We will show you a bit work around. Parmeshwar will show you a bit work through about Excel, some basics of Excel, so that at least you know the idea about how to use MS Excel as work. So, with on this note, Parmeshwar, welcome back. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. After nearly 1 year. Yeah. How are things, Parmeshwar? How are things? Like, life is going good. Life is going good for everyone. I hope so. And yeah, great. So we can like go ahead with the questions regarding how it works is okay. The reason why we chose to talk about this particular thing is I have been receiving some text. बोलते अपने जो groups है उसमें लोग text Right. करते रहते हैं. Yes. Do you know any person who can train them on Excel, or do you know any person who can train them on presentation if they can guide somewhat? So ये चीजें आते रहते हैं, and this is important because these things are part and parcel of the working environment. ये चीज अगर करियर में कहाँ पर भी रहे तो उसका काम ही आता है. So I thought, okay, let's conduct a session. Let's have a discussion. In fact, rather than session, I would call it a discussion. Yeah. Let's have a discussion with Parmeshwar, जहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि भाई MS Office किसको यूज हो सकता है, कहाँ पर यूज हो सकता है, कैसे यूज करना चाहिए, और अल्टीमेटली इससे इम्पोर्टेंस क्या रहता है लोगों को, और बेनिफिशियल कहाँ रहेगा. सो आई विल स्टार्ट इट. ठीक है, एक डिस्कशन टाइप में करते हैं. देखो परमेश्वर, आई हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री फ्रॉम सम 13 years. तो काफी सारा काम करके रखे अपन. Yes. I have seen it. I've grown from step by step. तो आज से I started my career back in 2007. Yeah, I know. Yeah. तो उसके बाद जो अपन that time अपने को कुछ एक्सेल ये वो नहीं आता था. I had done MSCIT. तो बेसिक चीज मालूम थी, और Basic stuff, yeah. तो मालूम था, तो उस पर थोड़ा सा ये करते थे. बट उसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस आई रियलाइज व्हेन आई कंप्लीटेड 1 or 2 years. तो वो ग्रोथ में, राइट, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, द बेसिक पॉइंट इज आपको एक्सेल आना चाहिए. आप लीडर बनोगे. ये आप आज यू जॉइन एज अ प्रोफेशनल, मे बी यू आर एग्जीक्यूटिंग सम टास्क दैट इज गिवन टू यू, बट व्हेन यू गेट अ टीम टू हैंडल, यू विल बी इन दैट डेटा जो आपका प्राइमरी टास्क रहता है, राइट. सपोज इफ एनीवन इज जॉइनिंग एनी कंपनी, कोई भी कंपनी रहने दो, वो अगर कोई आईटी कंपनी में भी काम कर रहे हैं या फिर कोई बीपीओ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, सो दे हैव टू डील विद पीपल. लोग तो रहेंगे ही, कहाँ पर भी है लोग तो रहेंगे. लोग रहेंगे तो डेटाबेस रहेगा, लोग रहेंगे तो प्राइमरी डेटाबेस तो रहेगा. अगर रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहा है तो कोई रिक्वायरमेंट्स का डेटाबेस रहेगा, कब कोई ज्वाइन कर रहा है वो रहेगा, कोई लीव पर जा रहा है वो रहेगा. तो कितने सारी चीजें रहते हैं, राइट. अगर हाँ, तो अगर अब मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ. इफ यू टॉक अबाउट एन HR, ह्यूमन रिसोर्स, तो समझो कि ह्यूमन रिसोर्स को जो है, he keeps conducting interviews, he keeps conducting.
तो वो पूरा डेटा एक पेज पे लाते हैं. हाँ. सो पूरा पे डेटा फिर कोलेक्ट करते हैं, कौन इंटरव्यूज को आ रहा है, कौन सिलेक्ट हुआ है, कौन रिजेक्ट हुआ है. तो मैन्युअली तो नहीं कर सकते, नोटबुक्स पे नहीं कर सकते. Right. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सेल. तो एक टोन सेट करना था. सो नाउ टेल मी परमेश्वर, बोलो व्हाट यू हैव टू टेल अबाउट इट. सो So people can directly hear from the MIS expert. Parmeshwar is a working professional. He has been doing it from last 3.5 to 4 years. So it's directly good to hear from his directly from the mouth of the horse. Bolo Parmeshwar, chalo. right. So if you're working, like if you're working on data particularly, so you have to have know about the basic stuff and all the things about Excel. That is much needed things. You have to go forward if you are working on data. If you are in like any industry, let's suppose in a financial industry you are in, let's suppose you are in a IT industry, but that's a fact. Like you have to have the confidence and the build that you have to know Excel about all the things, and you have to like know Excel. Yeah. Yes, sir. So ट्रू. सो बेसिकली देखो, मैं एचआर के बारे में बात कर रहा. एचआर भी बहुत बड़ा फंक्शन है और हर एक फंक्शन में एक्सेल ही यूज होता है. right. अब स्टार्टिंग में मैं एक रिक्रूटर के बारे में बात कर रहा. एज अ रिक्रूटर डेटा कोलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं. यू टेल मी परमेश्वर समथिंग अबाउट, अभी दिस इज एचआर साइड ऑफ इट, बट देयर इज बिजनेस साइड ऑफ इट एज वेल. बिजनेस साइड यानी कि जो एक्चुअली डिलीवरी टीम रहती है. एचआर इज अ Right. फंक्शन मच इनटू सपोर्ट फंक्शन. अब बिजनेस टीम जो रहती है जनरली, अगर इनको कोई टीम लीडर है या कोई चीज है, तो कौन से रिपोर्ट्स जनरली दे हैव टू वर्क ओवरऑल जो है कंपनीज में कौन से करते होंगे, दिस रिपोर्ट्स दे वर्क, हाउ कैन दिस थिंग्स लाइक एमएस ऑफिस जो है. एमएस ऑफिस इज अ बिग पैकेज. इसमें Right. एमएस एक्सेल रहता है, फिर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है. अब ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोग जनरली जो रहता है, why will they get in touch with MIS, और MIS वाले से उन लोग उनके रिपोर्ट्स कौन से रहते हैं जो आपके साथ से लोग रिफ्रेश कराते हैं जनरली, नॉट Right. कंपनी स्पेसिफिक, एक ओवरऑल जो रिलेशन रहता है कंपनी के और MIS वाले के बीच में. Right. So my broader perspective देता हूँ. Like if you have any managers or if you have connected with any managers, so उनका क्या होता है basically point of view. We want a report that is being like visualization good, and like it's looking good in this thing Excel or presentation skill. Like it should be in a proper format and this thing. So that should be there. So Excel में हम लोग जो होता है MTD, एक MTD report होता है basically month to date report. Yeah. So उसमें क्या होता है कि we have to give the particularly like let's suppose month to end का जो भी reports होता है, like दिस मंथ का कुछ भी सेल्स वाले सपोज फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो वो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो भी सेल्स हुआ उस मंथ में, वो दैट विल बी कैटेगराइज्ड इन द सर्टेन फॉर्मेट, एंड दैट विल बी प्रेजेंटेड इन द एक्सेल शीट्स. वो होता है बेसिकली. एंड अगेन दैट वाईटीडी रिपोर्ट्स होते हैं बेसिकली. मंथ टू डेट तो हो ही गया बेसिकली. लेट्स सपोज हम अभी YTD ईयर टू डेट है, वो तो पूरा ईयर में आज तक जो स्टेटस है वो करेक्ट बेसिक रिपोर्ट रहेगी. यस. सो बेसिकली होता है ये तो होता ही है. एंड देन जैसे कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग अबाउट एमटीडी रिपोर्ट्स, सो मंथ टू एंड में जैसे कि अभी चल रहा है जून, व्हिच इज जून, तो जून के जो भी 30 जून के नहीं कंटिन्यू, चलो कंटिन्यू. या सो एक सेकंड सर, जस्ट आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई एम सॉरी. And that's so okay guys, meanwhile till Parmeshwar is back, तो दो टाइप के चीजें होते हैं. ओके, रिपोर्टिंग एज आई सेड वो सब तरफ यूज होता है. एंड परमेश्वर वाज सेइंग दैट के पीपल दे इंटरेक्ट विद एमआईएस टीम एज वेल टू गेट सम ऑफ द रिपोर्ट्स. फॉर एग्जांपल, आप अगर फाइनेंशियल सेक्टर में है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेल्स. अगर आप सेल्स पर काम कर रहे हो तो बेसिकली देयर हैज टू बी अ रिपोर्ट. मे बी सेल के प्रोजेक्शंस क्या थे, मे बी सेल के टिल डेट करेक्शन कितना सेल्स हुआ, कितना टर्नओवर हुआ. देन ऑल दीज थिंग्स जो होता है ना, ये डेट वाइज जो होता है, ये रिपोर्ट्स मेंटेन कर रहा होता है एमआईएस के पास. एमआईएस जो होता है वो वर्क ऑल दीज थिंग्स. तो मैनेजर्स जो है, मैनेजर्स दे वर्क क्लोजली विद एमआईएस टू सी वेदर द रिपोर्ट्स आर फाइन. उनके टीम का स्ट्रक्चर्स जो है, उनका टीम का ये, तो यहाँ पर दो चीजें हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट
you should know how to use Excel sheet, and you should also know how to read the pivots tables, right, Parmeshwar? यानी कि Yeah, वो basically. आना चाहिए. You should know about the pivot things, like all the reports, and basically if you want something quick reports, that if you have a data like huge data around 4 6,000, and you want to see a specific part of that particular thing, so you can use pivot and directly see that particular part. So yeah, pivot is generally used for that. सो आना भी जरूरी है, वो डेटा को वो पिवट में डालने आना भी जरूरी है, और एट द Right. सेम टाइम अगर वो नहीं आ रहा तो एटलीस्ट रीड करने आना भी जरूरी है. Right. तो Right. मिनिमम पॉसिबल चीज है कि भाई आपको एक्सेल आना चाहिए. अगर आप टीम में हो तो यू शुड नो हाउ टू रीड एक्सेल. Not only how to read Excel, you also have to work on some of the reports. Parmeshwar, you have spoken from MIS point of view, right? Yeah. But let me tell you, overall details जो रहते हैं वो MIS के पास रहते हैं. कंपनी के डिटेल्स, प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स, फिर मंथ वाइज डिटेल्स कंपनी के रहते हैं. बट मीनवाइल जो है, राइट, ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है. ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है. इफ यू आर वर्किंग एट अ बिगनर लेवल, अगर आपको ग्रो करना है, इफ यू नो एक्सेल, देन you will get a preference because you already know how to use the data. And when you actually when you move up the ladder, when you move actually up the ladder, you have to work with the employees which are available. So एक छोटा सा डेटा तो आपको भी मेंटेन करके रखना ही होता है, लाइक हाउ मेनी टीम मेंबर्स यू आर, किसका परफॉर्मेंस कैसा है. एक इंटरनल डेटा भी आपके पास चाहिए होता है, और बेसिक जो ओवरऑल रिपोर्ट्स रहते हैं वो आपको एमआईएस प्रोवाइड करता है, जो आपको वेरियस रिपोर्ट से रन करके. उन लोग जो है मैक्रोस भी यूज करते होगे, राइट परमेश्वर? Right. Yeah. Like if you have some repetitive task that is like repetitive one again and again, so you can execute a macro. You can set a macro for that, and you can just again run that task. So you don't have to go again and again. You don't have to waste your time to utilize that task, and you rather focus on the task which is given to you, and you can just quickly do it by using macros. तो गाइस इन शॉर्ट जो है ना, एमएस एक्सेल जो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी कर देता है. इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. मैन्युअली डुप्लीकेट इधर उधर अपडेट नहीं करना है, एंड इट्स अ वास्ट ओशन. वो तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा चीज है आप एक दिन में करके पूरा सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है. स्टेप बाय स्टेप पिवट्स रहते हैं, मैक्रोज रहते हैं, वो सॉर्टिंग रहता है, फॉर्मूलेज रहते हैं. और ये भी कुछ नहीं, आप हर एक सेल का अलग से उसमें आप इक्वल टू डाल के अलग अलग इक्वेशंस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. अरे बहुत वास्ट चीज है, और ये हर जगह पे यूज होता है. एमआईएस में यूज होता है, और एमआईएस में जाना है तो इट्स अ मैंडेट. और एमआईएस होता क्या है, लेट्स हियर इट फ्रॉम परमेश्वर. एमआईएस में जिसको कंफ्यूजन है, परमेश्वर, एमआईएस बेसिकली होता क्या है इन योर वर्ड्स? Like MIS basically होता है कि basically you get the data, and you make like the data is in some another format and some another this thing, so you make a sense out of it. So data is basically the given data which is name, let's say contact, which we are given. So you make a sense out of it. Basically it's, you have to show them what is there in the data. You have to show it in the format of by taking a format out of it, by making a pivot, by making a like basically a chart of it, a chart and visualization. You have to have the things like you have to see whether what is showing, what is there in the data, and you should always focus on that. So I hope you understood that. तो हमारा फंक्शन जो रहता है ना, हर एक कंपनी में रहता है. हर एक कंपनी में रहता है, क्योंकि रिपोर्ट हर कंपनी में रहता है. रिपोर्ट हर कंपनी में रहता है, बट एक वो बंदा रहना चाहिए जो आपको रिपोर्ट्स को रीडेबल फॉर्मेट में बना सके. और वो जो है ओवरऑल जो है एमआईएस कैन डू दैट. और पूरे जो रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही वेदर यू आर व्हाट प्रोजेक्शंस यू कैन ड्राइव. आप आपके जो रिपोर्ट जो है ऑलरेडी आप यू कैन ट्रैक योर डे परफॉर्मेंस टिल डेट. You can help, it can help you in coming to some conclusions. It can also help you to create some macros wherein you can record entries and exits and day to day items if you are working in a company. So काफी सारा चीजें रहती है. If you are working in a particular company, आपको अगर एक macro बना के दे दिया किसी ने कौन है, वो MIS है. They can help you with the macros wherein you can update के क्या क्या आप कर रहे हो. तो MIS के काफी सारे requirements और scope रहते हैं. एंड एमआईएस का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक्सेल. तो एक्सेल एक रिक्वायरमेंट होता है, तो यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज वी सेड कि ये
MIS के अलावा it will help you even if you are a human resource professional. आप अगर ट्रेनिंग टैलेंट मैनेजमेंट में हो, then you have to track the leaves. You have to know the level rate of attrition, how which team is performing good, कौन सा कहाँ पर है, like joining people, joining in interviews if you are into recruitment, interview scheduling. Quarterly bonuses, if there are quarterly bonuses, so HR have to assign the quarterly bonuses as well. Yes, so you have to track it in the Excel. वाले लोग ही करेंगे तो एक्सेल में ही जाता है. अगर आप एक्सेल पर नहीं आएगा ना आपको, तो आप लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे इफ यू वांट टू मूव अप द लैडर. अगर आप जूनियर लेवल का कुछ काम कर रहे हो तो इट्स ओके, बट इफ देयर आर टू पीपल एंड देयर इज वन प्रमोशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन दैट ऑफिस, if both of them are on the same level, but if one person is good in Excel or MS Office, then this person will get an upper hand. So you have to know Excel sheet. आप कहाँ भी कुछ भी करो, you have to know MS Office. उसमें primarily Excel. Promotions के लिए use होता है, डेटा शोकेस करने के लिए यूज होता है, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज होता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो वी थॉट ऑफ जस्ट कवरिंग इट अप and clearing all the doubts and making a video which can clear all the doubts of yours. और now it doesn't stop here. ये खाली यहाँ पर ही नहीं रुकता है. The data, okay, ये डेटा है ना, अगर आप क्वालिटी में कोई टीम पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल if you are working on some Kaizen events or improvement of some company, data ही है जो आपका बेस रहता है. It is data, what is your base? So you have to work on this data. आप day in day out आप data पे काम कर रहे होगे. If you are a Six Sigma holder, if you are a black belt holder, if you are working to provide some improvement in an organization level, so क्या करते हो आप वहाँ पर? How will you know what organization is doing? How will you know what is the improvement required? How will you know what are the challenges that the organization is facing? It's data. Data के सिवा बात ही नहीं होती है. Data is the base of everything. And how you find out where the data stands, how the employee performs, what are the drawbacks, what are the shortcomings, is by running through it in a proper manner, जहाँ पर वो presentable format में होता है. और उसके साथ आप खेल सकते हो अलग अलग फिल्टर्स अलग अलग है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो इट. क्या बोलते हैं परमेश्वर? Yes, absolutely sir. It was great. So वही जो basic fundamentals है, you have to step up the ladders by going Excel. You have to learn Excel and rest all the things, presentation skills, PPT you have to learn, and that's all. Like if you want a corporate careers to be like boosting corporate career, you have to have the Excel knowledge about the things, and PPTs you should know. और ये आप जो जनरल रिपोर्ट्स बनाते हैं, लाइक योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो आप रिपोर्ट्स, जो फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स, इफ इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टीम हु डील्स विद हायरिंग पीपल और फुलफिलिंग पीपल, फुलफिलमेंट रिपोर्ट जो आप वीकली बेसिस पे आपके टॉप मैनेजमेंट को शेयर करते रहते हो, attrition reports, पीपीटी रिपोर्ट, लीव से कितने लोग रिटर्न आ रहे हैं उनका रिपोर्ट, प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, एफिशिएंसी रिपोर्ट, ये जो आपके टीम का आप इंडिविजुअल लेवल पे भी शेयर करते हो ना, तो यू शुड नो के बेस डेटा में से फिल्टर आउट कैसे करते हैं. आपको एक बेस डेटा तो मिल जाएगा एमआईएस से, और उसमें फिल्टर आउट कैसे करें, उसके कॉम्बिनेशंस कैसे करें. यू हैव टू नो दिस एंड टू प्रेजेंट इट फॉर द गुड. ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है. So like companies nowadays are using which is called CRM. They are using CRMs to provide like basic fundamentals by using a CRM tool. Any CRM tool I'm talking about. So one of that is Salesforce. So they use Salesforce for it. So if you want to record any data or like particular data, so you can record in that, and that data you can extract in the form of Excel, and you can just again visualize it in the Excel, and you can make a reports out of it in the Excel. That was what like basic companies are doing it right now. Many companies which is involved in the Salesforce data extraction are many companies. Like some of the big names which I'll take, which is Slack. If you know Slack, which is Discord type application which used for developers. So they also use a Salesforce this thing, CRM tools. So that's it. I'm aware of CRM tools, but I don't know what exactly they do. Yeah. So what they do. So but if you know, if you know Excel, so that will be much more headed towards that only. Yes. So agar Salesforce is one of the skill sets which is very much required.
and it's many requirements comes into Salesforce. Yeah. So अगर ऐसा है क्या, अगर Salesforce में काम करना है, and if you know Excel sheet, then it would be helpful for you. Uh, Not particularly, but Excels, अगर आपको you know Excels, you will get to know the Salesforce, how it's working, how the data filters are working, how Okay, okay, the okay. fields, how the fields are working. You will get to know all the things. You will understand automatically by if you have worked on Excel, you will get to know automatically things that are there in the Salesforce, and that's it. You can read, but the system जो है Yeah, automatically आजकल जो है they are using this tool CRM, yeah, Salesforce, ये सब चीजों में data club रहता है, and you can हाँ, export this data directly from into Excel, and if you right, know Excel you will be in a position to do it. right. सही है. Yes. और anything else, परमेश्वर? So, sir, I'll quickly. तो परमेश्वर लेटेस्ट चीजें क्या है in this particular thing, right? हम लोग we when used to work के macros रहते थे, pivots रहते थे, और डेटा रहता था, डेटाबेस रहता था, डेटाबेस से पीपलसॉफ्ट से या कहाँ से तो भी एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, तो वो सिस्टम रहता था, तो वो सिस्टम की जगह CRM नाउ, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग नाउ. Yes, yes, तो पीपलसॉफ्ट रहता था, वहाँ से डेटा हम लोग डाउनलोड करते थे, फिर वहाँ पर अलग उसको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा क्लीन करते थे, एंड दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी, और एमआईएस यूज्ड टू वर्क ऑन दैट. तो नाउ लेटेस्ट में देयर आर सम ऑफ द टेक्निक्स, सम टेक्नोलॉजीज जो यूज हो रहे हैं, उसमें पीपलसॉफ्ट के जैसा CRM भी यूज हो रहा है, दैट इज व्हाट यू सेड, राइट? yeah, sir. If you know about SAP, there is also SAP. Yeah, which is used for transaction, functional transactions of the accounting transactions जो भी invoicing process के होते हैं, that is used for that. SAP भी use होता है. वहां से अपन डेटा निकाल के वो बेसिकली एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देते हैं. Perfect, तो perfect. Yes, जहाँ yes. भी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट, SAP हो गया, पीपलसॉफ्ट हो गया, हाँ, CRM Salesforce, हो गया, Salesforce हो गया. Yes, ये सब चीज yes. को अपन रिकॉर्ड करते जाते हैं, और वी कैन एक्सपोर्ट दैट. अल्टीमेटली वो भी एक्सपोर्ट होता है एक्सेल Excel में ही आता है. Yes, फॉर गेटिंग अपडेटेड, जहाँ पर सिस्टम को होल्ड करके रखते हैं. व्हेन वी हैव टू रन रिपोर्ट फ्रॉम ऑल दीज फंक्शंस, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं. सो right. लॉजिकली वही है, दैट इज हाउ इट हैज बीन हैपनिंग सिंस लॉन्ग, एंड नथिंग हैज रिप्लेस्ड इट, एंड नथिंग हैज Yeah. From decades of decades, like Excel has never been replaced. Basically now CRM tools has come, but the fundamental aspect of the Excel is still there, still going to be there for decades and all. That's it. Yeah. So all those who are watching us, this is what Excel, MS Office, MIS, how to work into MIS, how to Right. grow, the importance of knowing all this stuff. Hope you understood this all. अब एक अपन परमेश्वर एक्सेल के बारे में बताएंगे क्या थोड़ा? Yes, I'll show you the MS Office, how you can access the MS Office on the web, which is free for everyone. So I'll show you that. I'll share my screen. Should I share it, Ramesh? Yeah, share Yeah. करो पर. Okay, I'll share my screen quickly and I'll show you how you can access MS Office. Yeah. So this is the one. What you have to do, you have to just type MS Office 365 to go ahead. Yes, this is, you can use it from web. Yeah. तो अगर आपके पास ऐप नहीं है, नहीं है. that's what people generally show, but we wanted to show it in a different manner कि आप वेब पे से भी directly work कर सकते हो. Yeah. अगर by any chance अगर we are not suggesting or you showing it to use from web, because ऐप रहा तो it's always better, but we want to show it to you कि आप उतना ही efficiently by any chance, अगर आपके पास ऐप नहीं है for any reason whatsoever, then it is web that you can also use it directly from there. Bolo, So yeah, so like web, this is free for everyone. So web you can use it directly. If you want a non-web access, which is a desktop site access, you have to pay some amount, which is 5,000 or something yearly. So that's it. So you can use it free from here itself, which is there, MS Office. You can directly go ahead and type MS Office 365, and you can just log in from here, MS Office 365, and you will get. You have to log in if you haven't created any IDs. You have to go through ID creation, and you have to log in again. Live with. Yeah, proceed. Yeah. So this is a home tab, and this is Office. These are all applications which is there. So Outlook, Teams, Excel, OneNote. Well, देखो this is very important. Yeah. Parmeshwar is showing you how you can learn Excel, थोड़ा basic चीज, how you can work on it and start working on this particular thing. Right.
Right. हाँ, Right. तो So नॉट बी लाइक एलियन टू एक्सेल. जब आप ऑफिस में जाओगे तो यू वोंट बी एलियन, एंड वो चीज जो है यहाँ पर ही अपन सॉल्व करके दे रहे हैं आपको. right. बहुत So important. Excel is one of the like topmost thing you have to learn. This all things, this application should be easily accessible from here, and you can learn it like on ease. But Excel, you have to grind some of the days you have to grind it, and you have to learn it. Okay. So I'll show you some of the Excel things which I'll present it over here. Just a sec. I'll stop my screen and I'll just import one this thing file. Start file. I can't see your screen, Parmeshwar. Sir, yeah, I've stopped my screen. That's why you cannot see it, because I've gathered this thing. I've gathered some data, so I'll show you over here. Yeah. तो परमेश्वर इन लोग को ट्राई करना है तो इन लोग को ऑनलाइन कहाँ से तो भी डेटा मिल जाएगा, या तो बेसिकली इन लोग ही बना लेना चाहिए. हाँ, data you can. I'll link this Excel sheet from my from my database, but you can get the data from anywhere. वो ऑनलाइन होता ही है. इट्स नॉट अ बिग डील. आप हाँ. कहाँ पर भी सर्च करो या फिर अपना खुद का डेटा बना लो इन अकॉर्डेंस विद व्हाट यू आर डूइंग. Right. नेम दो, रैंडम नाम डाल दो उसमें. इफ यू आर वर्किंग ऑन सम डेटा रिलेटेड टू योर एम्प्लॉय डेटाबेस, उसमें नाम डाल दो एक फील्ड में. कॉलम्स और रोज में सैग्रीगेट रहेंगे चीजें. दैट इज मैंडेटरी, दैट इज हाउ इट वर्क्स. एक रो में जो है अपना नाम डाल दो, एम्प्लॉय नेम डाल दो, एम्प्लॉय कोड डाल दो, करंट स्टेटस डाल दो, प्रोडक्टिविटी डाल दो, परसेंटेजेस डाल दो, and start working on that. Add as many as field as you want और उस पे practice करते रहो. So basically, sir, I'm not getting the data, but I'll show you. I'll show like everyone how you can like go ahead with the this thing web access web Excel. Okay. So this is particularly one part of it, home. So you will get all the fields over here. You can directly do like from this. If I type something over here. So guys, ये rows रहते हैं. Basic information जो slanting रहते हैं वो rows रहते हैं. जो A B C D वाले रहते हैं वो columns रहते हैं. And Right. as we were discussing, अभी Parmeshwar is actually making some of the data for you in front of you. Yes. So this is like you can take this. If you type any text over here, it will go into the left side of it, and if you type some numbers, it will go on the right side. Automatically it will go on the right side. If you want to, like, let's suppose if you want to get this left and right, you can directly go ahead with this and do it. Let's suppose you want to make it in the center, you can go ahead. This is the home tab, so you can format all the things from here. It will be generally on the format side of it, so you will get all the formatting tools over here in the home part of it. Insert, you will get a pivot tables. From here you will get a pivot table and main things regarding things, so you can just directly click on pivot tables that we were talking about. Let's suppose you want, sir, I'm going too fast over. थोड़ा थोड़ा डेटा बढ़ाते हैं अपन परमेश्वर. हाँ रॉ सर. रैंडम नंबर्स बढ़ाते हैं, सो दैट पिवट में अपन मल्टीपल थिंग्स बता सकते हैं इन एक्शन करके. Number नंबर ऑफ पीपल. correct. नहीं, नेम डाल दो ना, नेम डाल दो. नंबर ऑफ पीपल तो अपन डायरेक्ट पिवट करके बता देंगे. हाँ, नेम यहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप नेम. नहीं वैसे एक्सपर्ट ग्रुप आईडी डाल दो. एक्सपर्ट ग्रुप आईडी. यस. यहाँ पर नीचे खाली 1 2 3 4 डाल देंगे कुछ भी. यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन. यहाँ पे हमारा उसके नेम आ बाद जाएगा. ग्रुप बना के नेम ऑफ द पर्सन. नेम ऑफ पीपल मैंने किया. हाँ, नेम ऑफ पीपल. उसके बाद ज्वाइनिंग डेट कुछ तो भी डाल सकते हैं. हाँ, जॉइन डेट. यस, जॉइन डेट. डेट ऑफ ज्वाइनिंग. एंड देन डे और डेट डाल सकते हैं. डेट ऑफ ज्वाइनिंग. एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं लाइक एंड सीकिंग फॉर जॉब्स और करंटली वर्किंग वैसे वाला. स्टेटस फंक्शन अगर क्या है वो ऐड कर सकते हैं. फी, if there's fee, if it's a free program or if it's a paid program. yes, free or paid, so you can directly do that. यहाँ पे मैंने बना दिया. I'll just go in home tab and I'll just add one. This thing. I'll just bold it out
which is this Control B. You can directly bold, or you can click on this, so it will get bold. If you want to get into center, or like all text you want to center, you can directly go ahead and click on this. By selecting all of this, go into this, do center. So every text will be there in the center. Okay. After that, I'll just name some of. So there are like I'm naming any random things. नंबर ऑफ पीपल की जगह नेम ऑफ पीपल कर देना सूरज, टाइपो हो गया वहाँ पे अपना. अच्छा, नंबर ऑफ पीपल नहीं होगा, नेम होगा. राइट राइट, नेम ऑफ पीपल. ओके. एक्सपर्ट ग्रुप आईडी की जगह पर्सन्स आईडी करके डाल सकते हैं. ग्रुप कस्टम आईडी, राइट. हाँ, कस्टम कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप आईडी की जगह हाँ नेम आईडी या मेंबर आईडी. हाँ, नेम आईडी आएगा, मेंबर आईडी आएगा. यस, नेम आईडी यहाँ पे जैसे कि कुछ यूनिक आईडी होगा, लाइक 1 2 3 4 हमने दिया. एंड देन जो भी नेम्स होंगे यहाँ पे पता है. ये मैंने नेम दे दिया, एंड दैट्स इट. फिर sorry, date of joining, you can type any date of joining. So by if you want some dates, so you can just click on control and press on the column, like the comma thing. If I show you how comma thing looks like, it is look like this. This you can find it on your keyboard right beside the L. So you can just see control. You can click on control thing. Sorry. You can just click on control and plus this thing. You have to click on both. So it will appear the date of date, basically what is the current date for today. It will appear over there. So we can change it, date of joining on this date. And status, which is there, which is yes, is currently with us. Yes, no is not there. Okay. And fees paid, yes, fees is paid, yes, no. Okay. And we can just import it. We can just do it everything. So let's suppose you want to get a pivot table out of it. So you have to click on this insert table, and whether you want to choose a new worksheet, so it will create a table in the new worksheet, or you just want to create an existing worksheet. So it will create a table in here only. If you select this, select the location where you want to get it done, and it will create a table. So let's suppose you just want the status of every person you want to see. So we'll select a name of and put it into rows. So here you will get all the users, basically all the users around it, and I'll type some name, random things. Okay. So you will get to know. If you want to like refresh the data, go into review, accessibility, access, refresh all. So it will refresh, and the data which I have entered over here, it will come over here. Again, so I just want to see whether the status of that particular thing. I just want to see it's a huge data. Let's suppose it's a huge data. 4,000 5,000 people are there. We are not taking example of 5 people. We are taking example of 5,000 people. It's a huge data, and you have to make some sense out of it. Let's suppose you want to see the status, particular status of. So you just have to select this, and you just have to select in post column values, not into values. To select the columns. If I see filters में होगा ये. इसको ऐसा बताओ, वैल्यूज में डाल सकते हैं. एक show the fees के, show it in the form of fees who are paid or who are not paid. Correct. So यहाँ से हम लोग फिल्टर्स में से भी कर सकते हैं. If we want ये स्टेटस निकाल लेता हूँ मैं. So filters में अगर let's suppose people are there which we want to, like let's suppose जो fee वाले हैं and जो non fee वाले हैं,
और उनके कॉलम में भी वही लगा दो परमेश्वर, कॉलम में भी जो है ना पी सामने वाला उसके, हाँ उसके कॉलम में भी फील्ड हाँ डाल दो। तो इसके जो कॉलम्स में भी वो आ जाए। चेंज इट इनटू क्लासिकल फॉर्मेट का कुछ तो भी रहता है ना। हाँ ये वेब है ना, ये थोड़ा इसमें। ठीक ठीक है चलो चलो आई एम go ऑल्सो do- आई एम ऑल्सो लाइक कंफ्यूज अबाउट द थिंग्स, बट वेब में बेसिकली ये ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है सो चलो। अगर लेट्स सपोज यू वांट टू फाइंड इट आउट कि क्या हो रहा है इसमें, जैसे कि फीस वाले में को मैं वैल्यूज में नहीं, वैल्यूज में ऐड होगा, ये ऐड होगा विच इज देयर इन द फिल्टर्स। फिल्टर्स में ऐड कर दिया हमने। चलो एंड फिल्टर्स में ऐड, लेट्स सपोज आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर देयर which is a paid access is I've written over here like yes लिखा है मैंने। तो पेड जिन्होंने भी पेड लिया है उनका yes कॉलम आ जाएगा। तो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस, I'll just select, click on yes, and I'll get to know all the people who are selected yes. Basically you have selected a paid program, so I'll get to know all the things. And you can just copy this thing, you can just click share it, like you can just do it in the thing, you can copy, and you can just make a report, like basic report, how many people are there. So that's how like this thing works. What is called pivot tables are work like this. Okay. सो बेसिकली जो बेस सोर्स डेटा है वी पुट इट इन अ स्मॉल प्रेजेंटेबल फॉर्मेट, और Yeah. उतना डेटा एक्सेस उसके साथ खेलने की वजह वी जस्ट हैव अ टेबल इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी कीप प्लेइंग विद दैट एंड कीप गेटिंग रिफ्रेश नंबर्स। Right. फॉर एग्जाम्पल अभी नाउ वहां पर जो फी स्ट्रक्चर का है, इफ यू वांट टू सी द स्टेटस ऑफ द पीपल राइट, तो डायरेक्टली वहां पर वी कैन ऐड द कॉलम का ऐड कर सकते हैं स्टेटस वाला, एंड वी कैन डू सम सिमिलर थिंग्स। सो इट्स सही है सही है। सो दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ थिंग्स वर्क, पिवट वाला कैसा काम करता है। Right. So that's it. I think if I'll go in detail, it would be much longer session. So Ramesh sir, should I go in detail about all the things नहीं insert do? नहीं नहीं, पूरा नहीं करेंगे अपन परमेश्वर। Okay. देखो पिवट टेबल का द पीपल राइट, द बेसिक थिंग इज दैट इज हाउ पिवट टेबल वर्क्स। सो परमेश्वर ने तो इतना बता दिया कि टेबल हाउ टू यूज इट, हाउ टू हाउ टू एक्सट्रैक्ट अ पिवट टेबल फ्रॉम द सोर्स डेटा, और वहां पर स्पेंड सम टाइम इफ यू वांट टू लर्न इट, इफ यू आर डूइंग सम वर्क वहां पर स्पेंड सम टाइम ऑन द डेटा by playing with some filters, you will automatically realize के कितना इजी होता है। परमेश्वर एक वी लुकअप का बताते हैं परमेश्वर। Yes. We can go ahead with the VLOOKUP thing. So let's suppose मैंने I'll get a sheet 2 which is over here, and मेरे पास ये जो sheet 2 है, let's suppose this is huge, the data is huge over here. ठीक है, यहाँ पे डेटा यूज है, बहुत बड़ा डेटा है, इट इज अराउंड 4-5,000 डेटा, और ये आप मैनुअली यू कैन नॉट डू इट मैनुअली। सो हमको चाहिए कि जो पेड है या जो अनपेड है, विच इज आई वांट द यस नो कमेंट्स ओवर हियर। हमको वी वांट कमेंट एंड दिस इज अ नेम। लेट्स सपोज वी वांट इन अ separate sheet, so and this Mohit and all, which is like it's not in the like proper format with regards to this particular sheet. It's not related to the format. Name कैसा भी है वो ऊपर नीचे नेम, ये यहाँ पे आ गया, सूरज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। and this तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड एवरीवेयर। पी वी लुकअप जो है इट इज लाइक अ ब्रेड एंड बटर फॉर द पीपल हु वर्क ऑन एक्सेल। right. So how you gonna take it? अभी ये क्वेश्चन है, how you gonna like take the data. Let's suppose ये बहुत बड़ा डेटा है which is around 4-5,000 का यूरोज है, कॉलम्स है, and you have to take the data. आप मैनुअली तो कर नहीं सकते, you cannot do it manually by looking सूरज में yes है, फीस yes है, तो I'll put yes over here. ऐसा तो कर नहीं सकते, we cannot do it. So that's why we use this function called VLOOKUP. You have to just apply the VLOOKUP equal to VLOOKUP. You have to do that's on tab. So it will ask for this scenarios which is there at the bottom of it. Lookup value it will ask, lookup array. I'll go one by one.
So it will ask lookup value. You have to select a lookup value, which is this. We have to search this lookup value. Input this. It will ask again table array. So this lookup value you have to search it against which table you want to search. So you will give the table against this, which is we want to search this sheet. So in web now it's particularly this. We have to select comma thing. So it will work on that. Yeah. After that, we have to select name of people, and you have to select the range of that this thing. So I've selected the range, and we just click on Control 4, F4. So it will log the table, and we'll select comma again. Put it over here. You have to select comma and the value that we want 1, 2, 3, 4. Suppose we want the column 4 value. So I'll put 4 over here. I'll go on that sheet again, 4, comma, and then 0, to which we want exact value or like not exact value. So we want exact value. So I've typed 0, and that's you have to click on enter, and then it will give all the things, all the like you have to just drag it out, and it will show all the people like all the things which is there in the sheet, and it's populated over here. Okay, by applying the VLOOKUP. Now again, if you remove some things, it will also get removed, which is because the formula is applied over here. It will again come as NA. So what you have to do, you have to just select it out, and you have to select 1, 2, 3 format over here. So now it will not go because it's in the format of text. So you have to if you delete this, it will stay here forever. Okay, so that's how the VLOOKUP works. I hope it makes sense how you can use VLOOKUP. Yeah, it was very helpful. So वही लोग struggle करते हैं कि VLOOKUP क्या है, they keep hearing about it. So guys, this is what the VLOOKUP is. और ये कब यूज होता है ज़्यादातर के when you have two different sort of reports downloaded from two different system. अगर समझो PeopleSoft से रिपोर्ट निकाल रहे हो और एक दूसरा सिस्टम कोई दूसरा है, समझो आप एक SAP से सिस्टम रिपोर्ट निकाल रहे हो, कोई भी CRM सिस्टम निकाल रहे हो, if there are two reports, different reports for different things, उसमें कुछ ना कुछ एक चीज यूनिक रहती है. यहाँ पर we consider name of the people as unique. वहाँ पर ID would be unique, some employee ID would be unique. So, एक रिपोर्ट में दूसरी रिपोर्ट से VLOOKUP लगा के whatever we want to get from that report, जो कि वो नाम के सामने है, here we updated that fee structure, right? Yeah. एक रिपोर्ट के सामने VLOOKUP लगा के दूसरे शीट से, and from that sheet which specific column we want to add in this particular sheet, we can do that, or that is how we can use VLOOKUP. So it's very useful. Parmeshwar, before we wind up, इसमें freelancing के jobs भी रहते हैं क्या Excel में? Excel में you will get like not get too much freelancing jobs, but you will get like more inclined towards graphic designing. You will get a job from that, which is I have experienced. I've got a job, like I've got a recent project which is of freelancing stuff, which is graphic designing. You can get a graphic designing one. नहीं रहेगा ना परमेश्वर, वो तो Excel related नहीं रहेगा ना? हाँ सर, वो तो I think it's not related. Data entry या कुछ, I'm just trying to figure out if someone knows Excel, तो work में तो उसको help होगा ही होगा. Perfect. क्योंकि yes होगा, वर्क में होगा, बट अगर किसको एक्सेल आया तो वो साइड बाय साइड कुछ इनकम जनरेट करने का सोर्स निकलता है क्या उस पे? आई गेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है अभी ऑलरेडी आ गए. सो लेट्स सपोज इफ सम पर्सन डोंट वांट टू टाइप मैनुअली, सो वो तो देंगे जॉब्स तो ऑलरेडी है एक्सेल के, बट like I didn't have experience, I didn't have applied to those jobs, so that's why I'm not perfect person to say. But basically freelance jobs भी है एक्सेल के. Correct. Yes. डेटा, प्लेइंग विद डेटा, वर्किंग विद डेटा, अपडेटिंग डेटा या डूइंग समथिंग, तो वो भी है.
Yes. If you do some research on that, probably that would be helpful for people. Okay, Correct. so if Correct. those who are working, if you start doing something on that, it will start be helpful for them. Or anything about this stuff, Parmeshwar, that you would like to share? Like this stuff. So you can Please, you can not on Excel, on the overall topic. Acha, for all Okay. topics. So yeah, after learning Excel, you should always you if you want the upper hand apart from anything, you should always go for the level ups. So you should always learn PPT after the Excel. How Ah, you gonna yeah, how you gonna show clients or your managers, how you gonna show the in a beautiful manner how this percentage we have achieved the percentage in certain sectors. Let's suppose we have achieved 5% of 15% in the quarter in one quarter, and you want to show it in a basically in good format and get good visualization. You have to learn PPT as well after this. So it will be much more easier. Apart from Excel, it will be much more easier to learn PPT after this. So that's my take on this. yeah. So guys, ये दो चीजें learn करो. परमेश्वर, we will set up something. We'll Rega- set up yeah, something जहाँ पर we can come up with some program wherein we help the people to know it, और इसको अपन थोड़ा सा we will charge it. इसको थोड़ा सा चार्ज करके थोड़ा सा we will charge it reasonably because अपने ग्रुप्स में मोस्टली लोग जो है they are job seekers, तो yeah, right. हाँ थोड़ा reasonable charge करके we'll see how we can provide the value, because at the same time they will also be more serious, तो charge रहेगा, we will charge it. But we will try to provide them the maximum value. अपन Excel पे और PPT पे कुछ तो भी करते हैं आगे. Sure. ठीक है, और meanwhile अपन will keep continuing with these similar sessions कुछ ना Short sessions. Yes. करते रहते हैं, so that people because ultimately the whole aim of a platform अपन free knowledge तो provide करते हैं, so that it would be helpful for people to understand new things. And guys, if you have not subscribed to us, yes, please subscribe it. Please do subscribe. और नोटिफिकेशन जी वो कुछ नहीं मिलेगा. Right. तो सब्सक्राइब भी करने से रीच भी बढ़ता है, बिकॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग देन इट शुड रीच फार एंड वाइड. तो उसको Right. सब्सक्राइब भी करो, और वी विल गिव यू हेड्स अप अबाउट व्हाट वी विल प्लान. अपन प्लान करके परमेश्वर विल. Sure. ठीक है. Okay. It was very nice, Parmeshwar. It was very nice and very Yeah. helpful. So people who had all those queries, who will have all those queries related to Excel, Yeah. MIS, VLOOKUP, pivot table, so what is the need of knowing Excel? All those queries will be resolved. The people who will watch this will help them. So thank you, Parmeshwar. We'll catch up soon with something else. And then, guys, make maximum use out of the knowledge which is shared, because no one has time to do all these things now. And we are thankful to Parmeshwar for taking out some time and sharing the valuable information to you that he's doing. Also, he's working, so taking time out of the work is a very big thing. So thank you all, Parmeshwar, and all the Thank you. best. Thank you.